हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम करने जा रहे हैं SBI क्लर्क मेंस का इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शनल मॉक नंबर 3 जो कि गाइडली का है। सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है वर्ड स्वैपिंग है। विथ इकोनॉमिक वेट शिफ्टिंग towards Asia-centric emerging economies, Western nation, especially the US, interested in India, counterbalancing China and advocating geostrategic dominance. India must highlight the contribution US economy ensuring for streamlined visa. US economy shifting for streamlined visa policy with economic weight इंश्योरिंग टूवर्ड्स एशिया सेंट्रिक। ए डी हो सकता है तो फिर बी और सी भी है। एंड हाईलाइट जियो स्ट्रेटेजी इंडिया मस्ट एडवोकेटिंग, पता नहीं। विंडिकेट, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज नो लॉन्गर अ प्रिडिक्टिव, नो लॉन्गर अ कॉन्सेप्ट ऑफ द फ्यूचर। तो ए और डी हो सकता है। ए और डी, इट इज़ द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड आवर डिजिटल रियलिटी। इम्पैक्ट स्पैन्स अक्रॉस इंडस्ट्रीज। तो ओनली ए और डी लग रहा है फिर। N. Biren Singh's decision to quit comes only 5 days after the Supreme Court ordered a central forensic lab to analyze audio tapes reportedly connecting the dots, ostensibly purportedly connecting the dots between Singh and the ethnic violence that पता नहीं क्या होगा। 6 months after Sheikh Hasina ouster from power in Bangladesh and arrival in India following a student-led protest, protesters reportedly demolished the homes of Awami League leader and demolished के साथ 5 या 6 and tarnished the mural of or defaced। 2 और 5 करते हैं फिर। The Indian government is reflecting temporary safeguard duty 15 or 20% steel import from China to the pressure of domestic। तो elevate pressure हो सकता है। सेकेंड वाले में तो 6 आएगा, तो contemplating हो सकता है थर्ड वाला। Hindustan Aeronautic Limited has pledged to dash the delivery of warplanes following a dash from Air Chief Marshal over production delay following a concern has pledged to expedite the delivery। फर्स्ट वाले में 2 लग रहा है। फॉलोइंग अ स्टेटमेंट कंसर्न, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है बट ये लग रहा है। नरेंद्र मोदी इज डैश ऑन अ डिप्लोमेटिक मिशन टू द यूनाइटेड स्टेट टू डैश बायलैटरल रिलेशन थ्रू प्रोस्पेक्टिव ट्रेड एंड एनर्जी एग्रीमेंट्स। तो यूनाइटेड स्टेट टू fortify, redefine bilateral, explore bilateral relations। तो सेकेंड वाले ऑप्शन में एक्सप्लोर 2 और 3। तो मोदी इज स्केड्यूलिंग ऑन अ डिप्लोमेटिक मिशन, कंसिडरिंग तो नहीं होगा, फिर सेकेंड होना चाहिए। ये क्या है? Often seems and the kind now being exhibited by US President Donald Trump has and his administration is no exception. Withdrawing from international commitment has become a
defining feature of Mr. Trump foreign policy and the latest decision to freeze foreign assistance adds to the list of drastic moves following the withdrawal from WHO and the Paris Accord. This decision will disrupt established global aid structure and have consequences for the millions who rely on US assistance for survival. This decision will disrupt established global aid structure and have dreadful consequences. Dreadful हो सकता है. While the full impact is yet to unfold, it is clear to those in the development sector that a cascade of negative dash is imminent. Cascade of negative implication. Negative influence. पता नहीं. इसको मार्क कर देते हैं. The administration also ordered the rapid dash of overseas US aid personnel within 30 days. The administration also ordered the rapid पता नहीं. US aid funds a range of programs which include health care, food aid including assistance to Gaza, and policy persuasion. assertion तो नहीं होगा, advocacy, petitioning भी नहीं होगा, alliance भी नहीं होगा, तो या तो persuasion, policy persuasion या advocacy दोनों में से कुछ होगा, but not sure. As the US retreat from its historical leadership in international development, the world will be left dash with the consequences of this reckless policy shift. The world will be left navigating with the consequences. नहीं, handling भी नहीं होगा, enduring भी नहीं होना चाहिए, फिर coping with the consequences of this reckless policy shift. ये हो सकता है. As the US retreat from its historical leadership in international development, the world will be left grappling with the consequences. तो grappling सही लग रहा है. Indian Air Force Chief Marshal Amarpreet Singh fired by the state-owned manufacturer Hindustan Aeronautics and exposing the unexpected delay in the one variable missile after the other, hitting the bull's-eye supply of the Tejas light combat to the IF. तो इंडियन एयरफोर्स ये वाला तो फर्स्ट होना चाहिए, ए सब में है. इंडियन एयरफोर्स चीफ मार्शल अमरप्रीत फायर्ड वन वर्बल मिसाइल आफ्टर द अदर, तो ए के बाद डी होना चाहिए, दो में ADC, तो डी के बाद सी हो गया. एंड एक्सपोजिंग द अनएक्सेप्टेबल डिले इन द सप्लाई ऑफ द, तो सी के बाद ई हो गया, तो फिर ये वाला हो गया. वोटर्स बैक्ड द भारतीय जनता पार्टी in a state plagued by double engine government narrative, the constant confrontation between the lieutenant governor and the chief minister. तो वोटर्स बैक्ड भारतीय जनता पार्टी, तो ये वाला फर्स्ट स्टेटमेंट होगा. वोटर्स बैक्ड द भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन गवर्नमेंट नरेटिव, AB दो जगह है, सॉरी AB नहीं है, AC है. डबल इंजन गवर्नमेंट नरेटिव इन द स्टेट प्लेग्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन बिटवीन, तो DE लास्ट में ये वाला होना चाहिए. फिर AC नहीं, ACBDE. The first half century since 1950, our population above the poverty line was basic subsistence and getting while amassing the firewood
for economic growth. The first half century since 1950. Our population above the poverty line. ए के बाद ई तो नहीं आएगा, बी भी नहीं आएगा. Was spent ticking the boxes. ए के बाद सी हो सकता है. ए सी एक में ये चेक कर लेते हैं. Spent ticking the boxes of basic subsistence and getting our population above the poverty line while amassing the firewood for economic growth. सही है. Congress promised that 2025 would be a year of the leadership. नहीं, organizational revamp. तो revamp and its first major exercise in this direction. तो A और D का पेयर है. A और D हो गया. First major exercise in this direction while showing the door to some. Back into action along with some young faces. तो back into action along with some young faces. The leadership brought in tried and tested leader back into action along with some young faces. तो B और C while showing the door to some. तो B C E होगा लास्ट में. B C E तो ये वाला होना चाहिए. As the new administration led by President Donald Trump makes budget cut, the United States had cancelled millions of dollars in funding for several countries, including India and Bangladesh. So, as the new administration led by President Donald Trump makes budget cut. As the new administration led by President Donald makes budget cut. नहीं, फर्स्ट तो नहीं होगा. कट इंक्लूडिंग इंडिया नहीं, ये भी नहीं होगा. द यूनाइटेड स्टेट हैज़ कैंसल्ड millions of dollars in funding for several countries including. तो D और E का पेयर है. D और E. D और E 1 2 3 जगह हैं. The United States has cancelled millions of dollars in funding for several countries including India and Bangladesh. उसके बाद President Donald Trump makes budget cut millions of dollars. DE. तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगा? द यूनाइटेड स्टेट हैज़ कैंसल्ड. तो सी वाला फर्स्ट होना चाहिए और DE पेयर है तो फिर ये वाला हुआ. चेक कर लेते हैं. द यूनाइटेड स्टेट हैड कैंसल्ड मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन फंडिंग फॉर सेवरल कंट्रीज एज द न्यू एडमिनिस्ट्रेशन लेड बाई बांग्लादेश एज द न्यू लेड बाई प्रेसिडेंट मेक्स बजट कट. सही है. इसमें एरर बताना है, इसको बाद में करते हैं. और से प्राइमरी ऑब्जेक्टिव मार्क कर देते हैं. तो ये पूछा व्हेन इज़ द इनकम टैक्स बिल 2025 एक्सपेक्टेड टू कम इनटू अफेक्ट. तो ये इजी है, इसको देख लेते हैं. टैक्स बिल 25 पार्लियामेंट थर्सडे. द न्यू बिल एम्स टू रिप्लेस टैक्स इनकम विच वाज 1961 80 पेज provisos 60 years scattered. The income tax bill 2025 makes a significant step to parliamentary and finance. It is expected to come on into effect from April 1, 2026. तो ये वाला हो जाएगा.
with the reference of the passage, which of the following is similar to meaning provisos? Complex explanation and provisos have been omitted, making the law more comprehensible. Explanation conditions have been omitted. Exemptions has been omitted. Amendments, regulation, penalty. तो या तो कंडीशन होगा या तो अमेंडमेंट होगा, कुछ रिटन टाइप का ही होना चाहिए. कॉम्प्लेक्स एक्सप्लेनेशन एंड, इसको बाद में देखते हैं. विथ रेफरेंस विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर टू मीनिंग स्कैटर्ड मीन्स फैला हुआ, तो डिस्पर्स्ड, कलेक्टेड, असेंबल्ड का, तो यही होगा. फिर ए में क्या होगा? If successfully implemented, this bill could enhance tax administration efficiency and encourage better voluntary dash among taxpayer. Better voluntary compliance. कंजम्पशन तो नहीं होगा, compliance हो सकता है. Among taxpayer. Better voluntary expansion. कॉम्प्लायंस लग रहा है पर नॉट श्योर, तो मार्क कर देते हैं. फिर से एरर का क्वेश्चन. द कंपनी हैज़ फेस्ड मच चैलेंजेस इन द पास्ट फ्यू ईयर बट हैज़ मैनेज टू ओवरकम देम थ्रू स्ट्रेटेजिक चेंजेस. मच चैलेंजेस, तो मुझे बी में गलत लग रहा है. ही वॉज एन एक्सीलेंट लीडर हु ऑलवेज मेड श्योर टू गिव एन ऑनेस्ट फीडबैक. मेड श्योर, तो सी वाला गलत लग रहा है मुझे, पर नॉट श्योर. द मैनेजमेंट टीम इंसिस्टेड टू इम्प्लीमेंट द न्यू स्ट्रेटेजी. इंसिस्टेड के साथ टू नहीं आता है. द मैनेजमेंट टीम इंसिस्टेड ऑन इम्प्लीमेंट, शायद इंसिस्टेड के साथ टू नहीं आता है, बी वाला रॉन्ग हो जाएगा. फिर द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द न्यूली इम्प्लीमेंटेड डिजिटल पेमेंट सिस्टम हैज़ सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव्ड कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड रिड्यूस ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग टाइम. तो पता नहीं इसमें. द मैनेजर सजेस्टेड टू कंडक्ट अ डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ द मार्केट ट्रेंड बिफोर लॉन्चिंग द न्यू प्रोडक्ट टू इंश्योर इट्स सक्सेस इन कॉम्पिटिटिव. नहीं पता. एरर, सब एरर का ही क्वेश्चन है, तो आरसी कर लेते हैं पहले. What is the primary objective of the Income Tax Bill 2025? Finance Minister Nirmala Sitharaman introduced the tax bill in Parliament on Thursday. This new bill aimed to replace the Income Tax 96, which has become cumbersome due to numerous amendments over the last 6 decades. The bill focuses on simplification, clarity, and ease of compliance of tax for taxpayer. तो एक फिल द ब्लैंक्स था ना, उसमें compliance ही होना चाहिए. फिर for taxpayer while retaining the fundamental structure of the tax. The bill focuses on simplification. Simplification. Rate higher for income. Replace the current direct. Simplified tax law. Improve clarity. ये वाला होना चाहिए. How does the new bill simplify tax terminology? The bill consists of this much, ठीक है. Making it one of the major changes the replacement of term previous year and assessment with tax year terminology. So previous year assessment year with tax year. Removing technical tax, eliminating all. तो फिर यही होना चाहिए. Introduces such not have been replaced with irrespective. सही है. Which of the following is not a key feature of the income tax bill? Key feature. The bill focus on इतना ठीक है.
The bill consists of one of the major changes is replacement of term ये भी हो गया. To further enhance clarity, ambiguous terms such as now respected, the new bill also introduces table and formula for the key calculations such as TDS. Introduction of table and formula for tax calculation. तो बिल इंट्रोड्यूस टेबल फार्मूला फॉर की कैलकुलेशन. तो पहला वाला तो सही है. सच एज TDS परसेप्टिव टैक्सेशन, सैलरी टैक्सेशन एंड डिडक्शन फॉर बैड डेब्ट्स. तो कंसोलिडेशन ऑफ ऑल TDS रिलेटेड प्रोविजन अंडर अ सिंगल क्लॉज. ये तो अभी नहीं मिला. कॉम्प्लेक्स एक्सप्लेनेशन हैव बीन ओमिटेड. Explanation and provisions has been omitted, making the new law more comprehensible, user friendly. A formal taxpayer charter has been included outlining rights and responsibility to promote transparency and fairness in tax administration. All TDS related provisions have been consolidated under a single clause. तो इस सेकेंड वाला भी सही है. उसके बाद additionally the bill integrates key court ruling from the last 60 years. Thus it's providing more legal certainty and reducing disputes. Provide legal clarity. तो लास्ट वाला भी सही है. To make exemption clearer, income that does not form a part of total income has now been moved to dedicated schedules instead of being scattered throughout the act. These changes are expecting to bring multiple benefits such as this is ठीक है easier. Despite these advantages, the bill faces certain challenges. Taxpayer and business will need to adapt the new terminal provision, the removal of previous year. ठीक है. The income tax bill is a significant step toward transparent, efficient, taxpayer-friendly system. While it does not introduce new taxes, an integration of judicial will reduce compliance cost. यार दो तो नहीं मिल रहा है. Taxpayers charter और ये expansion of tax exemption to new category. A formal taxpayer charter has been included. तो ये वाला सही है. तो फिर ये वाला बचा, ये गलत होगा फिर. What challenge might arise from replacing previous year assessment year with tax year? तो कहाँ गया? One of the major changes in the replacement of the term previous year assessment is eliminating confusion regarding tax filing timeline. It may lead to temporary confusion among taxpayer burden. Reduce happen तो ये वाला होगा फिर. How does the bill address the issue of legal dispute in taxation? Does bill address the issue of legal dispute? Issue of legal disputes in taxation. The bill focus simplification. The new bill also introduced table formula, taxation, charter, issue of legal dispute. Additionally, the bill integrated key court ruling from last 60 years, providing the more legal certainty and reducing disputes. ये वाला है क्या? By integrating key court ruling from the last 60 years,
ये है बट अभी चेक करना है। डिस्प्यूट्स, challenges, taxpayer terminology, the income marks significant more however does not. तो फिर यही होना चाहिए। What structural change has been made in the organization of tax exemption? Structural change has been made in the organization of tax exemption. They have been removed to simplify. They have been included in dedicated. They have been involved with deduction. They have been expanded to cover. They have been removed. Structural organization of tax exemption. This new will to replace which has been common due to numerous focus on this with regulatory and financial tax system. सिंप्लीफाई होना चाहिए फिर नहीं consistent होना चाहिए। one of major changes is existed to further enhance clarity and suggest table formulas such as this taxation complex expressions have been omitted because it is friendly। उसके बाद promote transparency all details related conclusion has been consolidated under a single clause revision content improvement comment addition and be integrate dispute the tax mechanical option structured to make tax exemptions clearer। Income that does not form a part of total has now been moved to dedicated schedule instead of credited। तो ये वाला हो जाएगा फिर। With the reference of passage which are the meaning of provisos, तो पता नहीं क्या होगा। ये वाला क्या है? आउटकम बाद में देखते हैं, देख लेते हैं। द डिमांड ऑफ लग्जरी गुड्स, इसमें बताना क्या है, कुछ में एरर तो सारे में एरर बताना है। द डिमांड ऑफ लग्जरी गुड्स जनरली रिमेन्स स्टेबल इवन ड्यूरिंग इकोनॉमिक डाउनटर्न ड्यू टू देयर टारगेट कस्टमर बेस। द गवर्नमेंट हार्डली नेवर, तो हार्डली नेवर गलत है, 2A गलत है। हार्डली अपने आप में नेगेटिव है, 2A। 3B चेक कर लेते हैं। द न्यू गाइडलाइन रिकमेंड्स दैट employees wear protective gear while working in hazardous environment। that employees wear, शायद यही होना चाहिए फिर। The government has imposed strict regulation to control the inflation which has been rising rapidly due to various global factors। पता नहीं। If the central bank don't intervene, don't तो नहीं होगा, 2 का A गलत है, 2 का A 2 जगह है। द इकोनॉमिस्ट हार्डली नेवर, 3 का A गलत है, 2A और 3A तो इसमें है। फिर क्या हुआ, ये वाला क्या है? ही वॉज एन एक्सीलेंट लीडर, ये नहीं पता मुझे, ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता। इसमें क्या बताना है? यू हैव टू फाइंड विच हैज़ नो एरर। The bank recent policy is more better than the previous one in terms of customer benefit. The loan was approved despite of his low credit score and insufficient income proof. The manager hardly never, तो इस थर्ड वाला तो गलत है। The committee is responsible to ensure compliance with all banking। तो ये नहीं समझ आ रहा मुझे। The bank has introduced a newer scheme to attract small scale entrepreneurs। हार्डली नो कस्टमर, तो ये गलत हो गया, हार्डली एनी कस्टमर होना चाहिए। द मैनेजर स्पोक मोर पोलाइटली टू द क्लाइंट दैन इज असिस्टेंट डिड। द लोन अप्रूवल प्रोसेस डिज़ाइन टू फंक्शन मोर फास्टर फॉर सैलरीड।
मोर फास्टर नहीं होगा, फास्टर अपने आप में ही सुपरलेटिव है, तो सेकंड गलत, फोर्थ गलत, फर्स्ट और थर्ड में से द बैंक हैज़ इंट्रोड्यूस्ड अ न्यूअर स्कीम, न्यू स्कीम होना चाहिए, तो फिर बचा ये वाला सही होगा। फिर द बैंक इज़ प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस अ न्यू लोन स्कीम फॉर कस्टमर्स हु हैज़ a good credit history. The inflation rate has rose significantly over the past 3 months, affecting customer spending. RBI plays an important role in regulating the banking sector and ensure पता नहीं क्या होगा. The bank has announced a new scheme which aims to provide loan for a small scale industry at a reduced interest rate. The RBI directed all the commercial banks to ensure their compliance. पता नहीं. नहीं आ रहा यार. कुछ आ ही नहीं रहा, क्या करूं, सबमिट करते हैं. मोस्ट अप्रोप्रिएट फिट 10th वाले में क्या होगा. While the full impact is yet to unfold, it is clear to those in the development sector that a cascade of negative outcome is imminent. Negative implications हो सकता है. और क्वेश्चंस मुझे आ नहीं रहे हैं, तो सबमिट करते हैं. तो मेरे ओवरऑल अटेम्प्ट हुए 27 और मेरे 5 क्वेश्चन आज रॉन्ग हुए और मेरा स्कोर बना 20.75. परसेंटाइल 96 है. सॉल्यूशन देख लेते हैं कि क्या गलत हुआ है. तो एक ये क्वेश्चन गलत हो गया, इसमें 2 और 5 नहीं होगा बल्कि 2 और 6 होगा, यानी कि डिमोलिश्ड और डिफेस्ड होगा. डिफेस्ड मीन्स टू डैमेज, और मैंने मार्क किया था क्या, टार्निश मीन्स ruining someone's reputation. ठीक है. नेक्स्ट ये गलत है, इसमें मैंने 2 और 5 मार्क किया, यानी एक्सपेडिट एंड स्टेटमेंट, और होगा इसमें 2 और 6 रिप्रीमेंट. तो रेफर्स टू फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल, और मैंने मार्क किया था स्टेटमेंट टू न्यूट्रल. क्या है ये, यहाँ पे ड्रेडफुल नहीं होगा, डायर होगा. डायर मीन्स एक्सट्रीमली सीरियस, अर्जेंट और डिज़ास्टर, और ड्रेडफुल मीन्स एक्सट्रीमली बैड, अनप्लीजेंट, और ये डायर मीन्स सीरियस, अर्जेंट, डिज़ास्टर्स. बहुत क्लोज है, इसलिए कंफ्यूज हो जा रहे हैं. यहाँ पे इम्प्लीकेशंस नहीं होगा 10th में, बल्कि रिपरकशंस होगा. एक्यूरेटली कैप्चर्स इस मीनिंग, सजेस्ट वाइड स्प्रेड एंड सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंसेस. ठीक है. ये 19th का क्वेश्चन जो है वो एरर का था, तो गलत होना ही है, कोई बात नहीं. फर्स्ट वाला है, यानी द डिमांड ऑफ लग्जरी गुड्स, तो डिमांड फॉर होना चाहिए, लग्जरी डिमांड फॉर, हाँ ये वाला होगा. फिर 3 का ए में क्या गलत है, 3 का ए में देखते हैं क्या गलत है. द गाइडलाइन रिकमेंड्स इनकरेक्ट, गाइडलाइन इज प्लूरल सो द शुड बी रिकमेंड, तो यहाँ पे एस लगा हुआ है, ये रिकमेंड्स के आगे, तो ये गलत है, रिकमेंड होगा. तो बाकी ये रहा. सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड. आपके इंग्लिश में क्या स्कोर आ रहे हैं, डू शेयर. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. टेक केयर एंड बाय बाय.